Good evening, everyone. I hope you all are doing very well. So let's continue with the same topic. I think till yesterday we have discussed about the basic elements, or we can say the basic outcome of a human relation approach, and I hope you remember that we have taken the reference of some important outcomes of this particular concept or hypothesis. Outcomes like social norms, then we have group, number of more outcomes like communication, supervision, and so on and so forth. So here we have discussed about every important outcome, every important result of the concerned theory known as human relation theory, which is mainly focusing on the human attributes and the human values. And today I am coming to, of course, one more important dimension with regard to the concerned theory, which could be asked in the mains examination. And that particular dimension would be, or is, the feature and some elements of the concerned theory. I mean, there are some features of the respective theory what I want to highlight over here, what we can write in the examination. Agree? So just you can write a broad title, a simple title, that is the features of human relation theory. The features of human relation theory. Let's come to the features part now. Agree? So see, when I take the reference of the features or elements of human relation theory, we can divide the elements into three broad categories. Okay, the very first feature or element of human relation theory would be nothing but called as individualism. Now what this individualism is all about, we are going to discuss in the coming 5 minutes. Then we have one more important element known as informal organization. Finally, the participative management. So see, what this individualism is all about. Now, one of the most important element, or you can say characteristics of the human relation theory, it is dealing with the human individual values. I mean, the locus and focus of Mr. Elton Mayo, who is nothing but the propounder of human relation theory, is to mainly focus on the individual attributes, individual mode of thinking, individual value system, individual priorities and individual preferences. इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंडिविजुअल जो एक कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके अपने एट्रीब्यूट होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, वैल्यू सिस्टम होता है, उसकी अपनी मोड ऑफ थिंकिंग होती है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड्स, ठीक है, द वैल्यू सिस्टम, ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस, एस्पिरेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल. सो दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज मेनली फोकसिंग ऑन इंडिविजुअलिज्म. I mean, it is required for the manager or the administrator. I mean, or it could be the honor of an organization to focus on individual aspirations and individual attributes. And then the concept is called as what? Individualism. Agree? So the very first element of the concerned human relation approach would be individualism. Okay? The second important approach what we can write in the examination with regard to the features of human relation theory would be nothing but informal organization. Now listen, according to this theory, within every organization, within every system, within every factory, company or administration, we are finding two types of organization. One is formal organization. The formal organizations are those which are created by some established rules and regulations. I mean, एक organization में कुछ organization ऐसे होते हैं जो formally बनते हैं. जैसे आपने सुना होगा कि कई तरह के trade unions होती हैं, ठीक है, जो कि एक rule और regulation के अंदर बनती हैं. कई तरह के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो भी एक रूल और रेगुलेशन के अंदर बन सकते हैं या बन जाते हैं. बट अगेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वी आर फाइंडिंग वन मोर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज व्हाट? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एंड दैट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, द इनफॉर्मल एक्टिविटीज एंड द इनफॉर्मल लिंकेज ऑफ ऑल द वर्कर्स विच आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. एक कंपनी में, फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका जो आपस में रिलेशन होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन or relationship within the group, ठीक है, that particular relation would create one more type of organization called as what? Informal organization. Although, listen carefully, although, ठीक है, there are no established rules which are propounded by, proposed by, demarcated by the organization for these type of organization, but in every formal organization or system, we are finding these type of informal organizations. कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, और एक ग्रुप के थ्रू ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सुनिए, ये भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था. Take an example, if I am working of course in a particular factory or company, and if I am the part of the same informal organization,
then it is required for me to follow all the instructions, basic norms, the basic objectives, the basic, you can say basically, aim of that particular organization, the informal organization. जो स्टैंडर्ड, जो नॉर्म एफिशिएंसी को लेकर, प्रोडक्टिविटी को लेकर, आउटकम को लेकर, आउटले को लेकर डिसाइड कर दिए इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एक ग्रुप के मेंबर को, जो कि मेंबर है उस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, उसे वैसे ही काम करना पड़ता है। नहीं तो हो सकता है कि ग्रुप उसको बॉयकॉट कर दे, हो सकता है कि उसका वैसा एफिलिएशन ग्रुप के साथ नहीं रहे, हो सकता है, ठीक है, कि फिर जो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलती थी उस ग्रुप से, वो अब सोशल सिक्योरिटी मिलना बंद हो जाए। द कंसेप्ट इज समवॉट लाइक दिस। इन every organization, I mean administration or company, we are finding the same type of organization which are having some standard or norms, and these standard or norms of productivity, efficiency, economy and effectiveness is required to be followed by every worker or every employee which is working in an organization. If they are not following the standard, the norms of productivity, production, okay, then of course the organization is going to boycott them. तो कंसेप्ट ये कुछ ये है जो मैं कल भी बता रहा था कि द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द सेम टाइप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, बिकॉज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ ए वर्कर. So the second important element or feature of human relation approach would be, okay, the informal organization. The very first feature would be individualism. Every individual is different. Every individual have its own aspiration, demands, priorities, preferences, values. Every individual, be very sure, have its own target, have its own career planning. And these individuals are coming together to create an informal group. The group is called as what? Informal organization. The informal organization determine the standard or norms of production and productivity, efficiency and economy. Okay? And the last important element or feature of human relation approach is focus is participative management. ठीक है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. इनका ये मानना था, मतलब एल्टन मेयो का, द प्रपाउंडर ऑफ द थ्योरी, उनका ये मानना था कि अगर मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव है, पार्टिसिपेटिव से मतलब होता है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स ऑलमोस्ट इन एवरी डिसीजन, इन द मैटर्स ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवैल्यूएशन एंड पॉलिसी मॉनिटरिंग. So if the management or the administration is involving the worker to frame a policy, हमेशा ध्यान रखिए, पॉलिसी इज नथिंग बट ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी या फैक्ट्री आने वाले समय में क्या करना चाहती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उसे बोलते हैं पॉलिसी. पॉलिसी इज नथिंग बट ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, अ टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान proposed by a particular company or a particular administration. So if the workers are involved in this intent, I mean statement of intent, the perspective plan, the futuristic plan of a particular organization, then that particular type of organization is much more participative. And once the administration or the organization becomes participative, it would be much more influential, much more productive, much more effective as compared to the other type of administration. तो एल्टन मेयो का मानना था कि उन ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बैठे हुए सुपीरियर अधिकारी जो हैं, वो वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, एक्सेट्रा में, वो जो मैनेजमेंट होता है पार्टिसिपेटिव हो जाता है. और अगर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है, तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ जाए. Because any type of change which had been done, of course, in a particular organization would be done by taking the prior consent of workers. If not the consent, then by taking the viewpoints of the worker. ठीक है, देखो इन लोगों ने, यानी एल्टन मेयो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था in Hawthorne, I mean one company in Chicago. Yesterday I told you that experiment is called as ventilation therapy. The term is ventilation therapy. अच्छा, वेंटिलेशन का मतलब यहां पर यह होता है, आई वांट टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर थेरेपी इन ए मच मोर सिंपल लैंग्वेज. मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि व्हेन द मैनेजमेंट इज टेकिंग एनी पर्टिकुलर डिसीजन, द डिसीजन वुड बी इम्पोज ओवर द वर्कर्स एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्कर्स, आई मीन एम्प्लॉय, टू फॉलो दैट पर्टिकुलर डिसीजन और पॉलिसी.
ये नॉर्मली फ्रेमवर्क होता है काम करने का, तरीका होता है काम करने का, ठीक है। लेकिन इनका ये मानना था, ये बात 1930s की, एल्टन मेयो का ये मानना था कि अभी तक मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्कर्स के व्यू पॉइंट नहीं सुने, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी डिमांड के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। So what he has conducted type of therapy called as what ventilation therapy. And in the ventilation therapy, what he has done, I mean Elton Mayo has done, he has talked to every worker, and by talking to every worker, he has taken the viewpoint, the demand, the priorities, the grievances, the dissatisfaction of a worker, okay, you can say basically of a worker against the management or against administration. मतलब वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्हें वर्किंग स्टाइल या वर्किंग आवर को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, ग्रीवांसेस हैं, इनके बारे में पहली बार वर्कर से पूछा गया। मतलब वर्कर्स ने अपने व्यू पॉइंट को वेंटिलेट किया, उसे एक्सप्रेस किया, और इससे वर्कर्स बड़े खुश हुए क्योंकि ये पहली बार हुआ था। देखिए ये बात हो रही है 1930s की। सो इन 1930s फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द मैनेजमेंट हैज एक्चुअली, जो एक्सपेरिमेंट किया था एल्टन मेयो ने किया था, और वर्कर्स को लगा कि ये जो पूछा जा रहा है उनसे विथ रिगार्ड टू एनी पर्टिकुलर मैटर ऑफ देयर वर्किंग आवर एक्सेट्रा हैज बीन आस्क्ड बाय मैनेजमेंट, बट एल्टन मेयो हैज इंडिपेंडेंटली डन दिस पर्टिकुलर थेरेपी और एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज वेंटिलेशन थेरेपी, ठीक है। तो वर्कर्स को ये लगा कि मैनेजमेंट के लोग हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी समस्याएं क्या क्या है, व्हाट आर आवर बेसिक ग्रीवेंसेस, डिससैटिस्फैक्शंस, प्रायोरिटीज एक्सेट्रा, and they are very much cherished. They get very much satisfied that of course the management peoples are asking them something about their problems and priorities, ठीक है। तो एल्टन मेयो का ये कहना था कि भले ही आप वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करो, लेकिन अगर आप वर्कर की प्रॉब्लम को केवल सुन लेते हो, when you are silently hearing and knowing the problems of the worker, and the workers are feeling that the management is of course talking to us on the matter of concern, important problems, then the workers are getting much more actualized and much more satisfied. Just by hearing their problem, they get satisfied. They presume, they think that now we are the part of administration, we are the part of organization, and our goal is almost co-equal to the goal of management. Management is listening us. Management is giving the due weightage to our problems. Management try to solve our basic, you can say basically fundamental issues. I hope you got my point. So just by hearing the problems of the workers or the employees, most of the problem could be solved of course at the grassroots level. And then this therapy is called as what? Ventilation therapy. The therapy had been conducted by Elton Mayo. तो मैं जो कहना चाहता हूँ समझिए, एल्टन मेयो को यह मानना था कि if the management is participator and the management is participating the workers, then the participative mode of management could bring much more productivity and effectiveness. So these are the three important elements or three important features of human relation theory. Yesterday we have discussed about the 5 important outcomes of human relation theory. Now these outcomes are showing a type of intermixing with the elements also. But the question could be asked of course in 5 marker with regard to the elements also. So I hope you are in a position to understand what this human relation theory is all about. I mean the result and of course also the features or elements of the concerned theory. मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए। अच्छा, अब हमें इस थ्योरी को इवेल्युएट करना है। आई एम गोइंग टू हाईलाइट द लिमिटेशंस और द क्रिटिसिज्म ऑफ द कंसर्न्ड थ्योरी, and then we are going to of course discuss about the evaluation part of the criticism called as the critical evaluation. So let's come to the critical evaluation part, but before coming to critical evaluation, just write some brief note about the 3 basic elements of human relation theory. इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, यू कैन राइट द टाइटल, एंड दैट एलिमेंट और फीचर इज इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। जस्ट राइट ए ब्रीफ नोट अबाउट इंडिविजुअलिज्म। Agree? Continue. According to this theory,
according to this theory, according to this theory, every person have its own belief attributes and every person have its own belief attributes and have its own belief attributes and value system, belief attributes and value system, ठीक है, value system. Continue. It is required for the management to give. It is required for the management to give. Required for the management to give due recognition to. It is required for the management to give due recognition to. Due recognition to the perceptions. Due recognition to the perceptions. To the perceptions. Perception and viewpoints of workers. Perception and viewpoint of workers. Viewpoint of workers. Continue. Focusing on individualism. या ऐसा करो. Focusing on the notion of individualism. By focusing on the notion of individualism. By focusing on the notion of principle of individualism, an organization can attain more production and effectiveness. More production and effectiveness. I hope you got my point. More production and effectiveness. More production and effectiveness. ठीक है. Second important attribute or feature of this particular theory, just write it. The second feature is informal organization. Informal organizations. Informal organizations. Continue. According to this theory, informal organizations are natural group of people in a work situation within a workplace within a workplace that exercises strong control over the work habits, and attitude of an individual worker. Work habit and attitude of an individual worker. Continue. Group standards normally apply strong influence over the behavior of an individual. By which the productivity and effectiveness of an organization also get regulated.
organization also get regulated. Also get regulated. Subsequently, last sentence, also get regulated. Subsequently, it is required for the management to give. It is required for the management to give. It is required for the management to give proper attention to. For the management to give proper attention to these types of informal organizations. Proper attention to these types of informal organizations. These types of informal organizations. Informal organization. I hope you got my point. Informal organization. Done? So it is nothing but the second important element or second important feature of the concerned theory, the informal type of organization. And now I am coming to the last important, you can say, element of this theory, and that is participative management. Just write it. Participative management. Participative management. Participative management. Continue. Participation of workers in decision making. Continue. Participation of workers in the process of decision making, comma, with regard to their work. Process of decision making with regard to their work. With regard to their work and working condition. With regard to their work and working condition. With regard to their work and working condition is very much required. Work and working condition is very much required. Is very much required to bring more effectiveness and productivity. More effectiveness and productivity. Clear? Productivity. Continue. According to this theory, it is required for the management. According to this theory, it is required for the management to consult. It is required for the management to consult. Required for the management to consult the informal organization of a setup or physical setting. Informal organization of a setup, comma, before bringing any change in their work schedule. Before bringing any change in their work schedule. Before bringing any change in their work schedule. Any change in their work schedule. In their work schedule and service conditions. Work schedule and service conditions. ठीक है? So I hope so all the important features, element, outcome, result of the concerned theory is very much clear in your mind. और ये theory कहना क्या चाहती थी ये भी आपके दिमाग में बड़ा clear हुआ होगा. And now we are coming to the critical evaluation part of the concerned theory. अच्छा, इन लेक्चर सीरीज में मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है. फॉर्मेट ये है कि मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैसे करना है अगर क्वेश्चन आते हैं तो. और जब हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग क्रिटिसिज्म को भी हाईलाइट करते हैं, हम लोग पॉजिटिव पार्ट को भी हाईलाइट करते हैं और क्रिटिसिज्म को बैलेंस करते हैं. दैट्स कॉल्ड एज क्रिटिकल इवैल्यूएशन. ठीक है, बट आई वांट टू डू ऑफ कोर्स सम विद रिगार्ड टू सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास. बट फॉर द अदर एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन यू हैव टू डू सम होमवर्क. मतलब कुछ पॉइंट्स तो मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल इवैल्यूएशन को लेकर और कुछ पॉइंट्स पर आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा मेरा और आपका दोनों का. सो लेट्स कम टू,
ठीक है, one more important aspect or dimension of this particular theory called as critical evaluation of human relation theory. You can write a broad title, critical evaluation of human relation theory. Critical evaluation of human relation theory. Critical evaluation of human relation theory. तो देखिए, I hope you are able to see the board. ठीक है, there are 5 important points under which we can criticize the whole theory. ठीक है, and sequentially I am going to cover, of course, every important point. I am also going to dictate some text about these important grounds of criticism and their proper evaluation also. So just focus. ठीक है, in which particular manner we can criticize the concerned theory. Focus. अच्छा, ध्यान दीजिएगा. Now see, the foremost criticism what we can highlight with regard to the theory of human relation is that, of course, the experiment which had been conducted by Mr. Alton Mayo, those experiments were conducted by taking very small sample size of workers. I mean, all the outcomes and all the results which had been given by Mr. Alton Mayo had been given by taking the reference of very small size of workers. What Mr. Alton Mayo has done in a particular company at Chicago, what he has done, he has taken the reference of course, some workers. It could be 10 workers, 15 workers, or 20 workers. And then he has analyzed the human behavior of the concerned worker. I mean, individual behavior of the concerned worker. So by taking the sample size of only 15, 20, 30, 40 workers, we cannot propound or we cannot propose some general perceptions about human behavior. No. It is not possible to understand human behavior in this very lucid and highly ornamental manner. No. आप केवल 15, 20, 50, 60 वर्कर्स के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके और फिर अगर आप ये कहते हो कि भाई वर्कर ये चाहता है, इससे मैनेजमेंट इफेक्टिव हो सकता है, इससे प्रोडक्शन बन सकता है, क्यों? क्योंकि वी हैव कंडक्टेड द रिसर्च ओनली ऑन 15, 20, 30, 40 वर्कर्स. So how we can generalize the concept about human behavior? It is not possible. Because the sample size of experiment, the sample size of expedition was very much limited, was very small. अब जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि दुनिया में ये बात है हालांकि बहुत पुरानी 1930s की जब ये थ्योरी आई थी, दुनिया में कई कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं. ठीक है, every company which is located in different part of the world, it could be a company which is in China or in Southeast Asia or in Australia, India, Latin America, South America, North America, Europe. So there could be of course so many organizations which are physically located in different countries, and every country and every worker of the respective country have their own attributes and attitudes. Matlab, the work habit of a worker who is working in a company of America would be different from the work habit and the values of a worker who is working in the company of India. How we can generalize the human factor or the human behavior? We cannot generalize it. मतलब अगर आप ये सोच के चलते हो कि अगर हर जगह पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो जाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हर जगह इनफॉर्मल ग्रुप पर हम लोग ध्यान देंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हर जगह इंडिविजुअल एफिलिएशन और इंडिविजुअल एस्पिरेशन को हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हर जगह डेमोक्रेटिक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. Because again we are finding some countries like China or other countries of Eastern Europe, be very sure, where these type of democratic setups are not working, or these type of democratic setups of human behavior are not existing, but then also they are bringing much more production in manufacturing sector. They are doing it. ठीक है, तो इनके critics का ये कहना था कि Alton Mayo has taken a very small size of workers, and by taking of course a very small sample size, he has generalized the concept about human behavior, which is practically not possible at all. बात भी सही है, and it is a foremost criticism of human relation theory, the foremost criticism of the concerned concept of human relation. We cannot generalize the human behavior, the human relation, the interpersonal relation. That's right. So it was a criticism, but then we can counter the criticism. How we can counter the criticism? Be very sure. ठीक है, क्योंकि when I take the regard of a particular individual or a particular organization, it was a very first time when any particular person like Alton Mayo has conducted any type of research with regard to human behavior.
And by conducting any such type of research about human behavior, ठीक है, the workers which are working in the same organization of Chicago, Hawthorne, they feel very much gratified and satisfied. मतलब भले ही सैंपल साइज छोटा था, मान लिया, भले ही हम कंसेप्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते थे, मान लिया, भले ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी अलग अलग देशों में अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग होने चाहिए, ये भी मान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जितने एक्सपेरिमेंट करे गए और बाद में जाके जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, मैं आगे बताता हूं आपको, सो मेनी एक्सपेरिमेंट हैड बीन कंडक्टेड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट अलग अलग देशों में हुए, ठीक है, उसमें एक बहुत ही कॉमन आउटकम बाहर निकल के आया, वो ये है कि अगर आप वर्कर की प्रॉब्लम सुनते हो और मैनेजमेंट अगर पार्टिसिपेटिव होता है, एक बहुत ही कंड्यूसिव माहौल होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, जिसमें वर्कर्स को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन, उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होती है। Like in the present setup also, if we take the regard of some large companies, it could be of course Google, Facebook, in our country Infosys, ठीक है, you can say Wipro, and what of the case may be, Reliance, etc., Tata's, etc., so and so forth. So Tata have a very, very different model to take the due reference of the psychological aspect of the workers. ठीक है, जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कई बार यूट्यूब पे भी आ चुकी है, मैं फटाफट आपको सुना देता हूं कि कैसे आप वर्कर्स को कैसे आप इन्वॉल्व करते हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। और ये स्टोरी कई बार सुनाई जा चुकी है यूट्यूब पर फिर भी कई लोगों ने सुनाई है, पर फिर भी मैं सुना देता हूं ताकि आपको ये पता चले कि ह्यूमन रिलेशन पर फोकस करने पर भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में काफी इंक्रीमेंट होता है। जैसे एक बार टाटा की कोई कंपनी थी, वहां पर कुछ वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, तो टाटा भी उनके साथ स्ट्राइक पर बैठ गए, ठीक है, although the board of management is not agreed with the demands what the workers are raising, but again the Tata, I mean the owner of that particular company, is supporting the workers and sitting with the workers of course on the same strike, ठीक है। तो क्योंकि इतना बड़ा आदमी टाटा खुद, रतन टाटा साहब खुद जब स्ट्राइक पर वो बैठ चुके हैं, वर्कर के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, टू रेज द डिमांड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी वेरी श्योर। तो वर्कर्स को ये फील हुआ, ये वर्कर्स को ये आप कह सकते हो एक तरह का एहसास हुआ, आप कह सकते हो कि जब इतना बड़ा आदमी हमारे साथ बैठकर हमारी डिमांड को, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो हमें भी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस आदमी के लिए सब कुछ करें। और इवेंचुअली द वर्कर्स हैव यूज्ड, आई मीन टेकन बैक देयर डिमांड एंड डिसॉल्व और अबंडन देयर स्ट्राइक, उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। So my concept over here is, although we cannot generalize the human behavior, that's right, although only on focusing on human attributes we cannot bring much more productivity and effectiveness, that's right, but focusing on human behavior, human attitudes, interpersonal relation always bring and generally bring much more productivity and efficiency. So the concepts, the outcomes, the beliefs and the elements which are propounded by Mr. Elton Mayo are relevant till date. And in this way we can evaluate the criticism of human relation theory. मैं आपको बार बार बता रहा हूं, पिछली क्लास के लेक्चर्स आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैसे करना होता है। अगर क्वेश्चन क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर आता है तो पहले ये बता दो कि हम किस ग्राउंड पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और फिर उस क्रिटिसिज्म को आप काउंटर करो, मतलब बैलेंस करो, और ये बताओ कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिटिसिज्म एब्सोल्यूट टर्म में सही नहीं हो सकता। There is nothing called as absolutism, and while writing an answer always we have to go for approximation in the sense we have to balance our answer, and how we can balance our answer to provide a different view about criticism, because every extreme criticism is not correct at all, no, not at all. And in this way we can do the critical evaluation part of this very first ground of criticism called small sample size. Small sample size. I hope you got my point. इस थ्योरी का एक और क्रिटिसिज्म किया जाता है, और वो ये है कि so many trade unions of different countries, ठीक है, trade unions of different countries, what they have done, ठीक है, they have demarcated or they have specified the team of Elton Mayo, I mean the
supporters of human relation approach as cow sociologist. A very interesting term had been used against the researchers or the scholars of human relation approach, and that is cow sociologist. मतलब ये सोशलॉजिस्ट तो हैं पर गाय की तरह, मतलब बड़े वीक हैं ऐसा माना गया इन्होंने, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला भाई ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन फैक्टर्स को या ह्यूमन एट्रीब्यूट्स पर आप फोकस करिए, मैनेजमेंट को पार्टिसिपेटिव बनाइए, तब जाके प्रोडक्शन बढ़ सकता है। But trade unions, be very sure, trade unions have opposed the perception and the outcomes which are given by, you can say, which are given by Mr. Elton Mayo and his supporters. Why the trade unions have opposed and demarcated and given the name of cow sociologists to human relation approach propounders? उसका एक रीजन था, और रीजन ये था कि इनका ये मानना था कि भाई आप किस पर फोकस कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर दोस व्हिच आर नॉट क्रिएटेड बाय एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, लिसन केयरफुली, बट ट्रेड यूनियंस, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड यूनियंस, लाइक इन आवर कंट्री वी आर हैविंग, ठीक है, INTUC, ATUC, different type of trade unions, and these trade unions are created formally by rules and regulations. So the main focus of Mr. Elton Mayo was on informal organization, but not on trade unions. Elton Mayo का ये कहना था कि अगर हम informal organization पर ज्यादा फोकस करें, हमसे मेरा मतलब है मैनेजमेंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का है या फैक्ट्री या कंपनी का है या एडमिनिस्ट्रेशन का है, अगर वो इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन पर ज्यादा फोकस करे, ट्रेड यूनियन पर उन्होंने बात ही नहीं करी, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करने के बाद, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप बनी जाता है, कुछ लोग आपस में मिलकर जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, इनके अपने स्टैंडर्ड होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। तो इफ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देन वी कैन ब्रिंग मच मोर प्रोडक्शन एंड इफेक्टिवनेस। बट अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियंस, ठीक है, मोर फोकस ऑन informal organization could make the trade unions much more irrelevant, and according to these trade unions they are the better representatives of the workers as compared to informal organizations. जो ट्रेड यूनियन है वो वर्कर्सों के हितों को, इंटरेस्ट को संरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेटअप ही नहीं होता है, ठीक है, उनको आप मोबिलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनको लेकर आप स्टैब्लिश नॉर्म्स नहीं बना सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमेशा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लोग मैनेजमेंट पर प्रेशर बना सकते हैं, मैनेजमेंट पर प्रेशर ट्रेड यूनियन बना सकती है। सो ट्रेड यूनियंस हैव क्रिटिसाइज्ड द ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट, ठीक है, एंड दे हैव यूज्ड अ टर्म फॉर देम कॉल्ड एज व्हाट, काउ सोशियोलॉजिस्ट। ऑल्दो दे आर सोशियोलॉजिस्ट, they are focusing on social angle of human behavior, that's okay, fine at all, but they does not able to attain the desired target or objective what a trade union can achieve or attain. A trade union is a much more better representative of workers as compared to these informal organizations, ठीक है। So it was a criticism of human relation approach. तो ये तो बात होगी criticism की, ठीक है, और वहीं के वहीं हमें इसको evaluate कर देना है, ठीक है। इवेल्युएट कैसे करोगे, ठीक है, इवेल्युएट इसलिए करोगे या ऐसे करोगे कि हमें यह देखने को मिलता है कि विद इन द ट्रेड यूनियन ऑल्सो वी आर फाइंडिंग सो मेनी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, आई मीन देयर आर सो मेनी ग्रुप्स विच आर वर्किंग विद इन द ट्रेड यूनियन ऑल्सो। सो अकॉर्डिंग टू एल्टन मेयो, जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल बनते हैं जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आपस में, ठीक है, जुड़ जाते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो भले ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना हो, लेकिन उसके अंदर हमें एक और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो ऑल्दो ट्रेड यूनियंस आर फॉर्मल सेटअप, दे आर क्रिएटेड बाय एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर हैविंग सम पावर एंड अथॉरिटी, दे कैन अप्लाई सम प्रेशर ओवर द मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर्स एवरी, बट विद इन ट्रेड यूनियंस ऑल्सो वी आर फाइंडिंग सो मेनी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ट्रेड यूनियन के अंदर भी कुछ ऐसे वर्कर्स होंगे या लोग होंगे, ठीक है, जो आपस में मिल जा रहे हैं, जो एक ग्रुप बना ले रहे हैं, और ये ग्रुप ट्रेड यूनियन पर भी प्रेशर डाल रहा है, और ट्रेड यूनियन पर प्रेशर ये डाल रहा है, बी वेरी श्योर, कि आप एक पर्टिकुलर इशू को लेकर या पॉलिसी को लेकर मैनेजमेंट पर ज्यादा दबाव बनाइए। तो विद इन द ट्रेड यूनियन ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ग्रुप्स कुड डेवलप, एंड दीज नंबर ऑफ ग्रुप्स विच आर इनफॉर्मल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज व्हाट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। सो माय कंसेप्ट इज,
अगर कुछ लोग आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो ये तो फॉर्मल हो गया, लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाता हो, लोग बढ़ते चले जाते हैं, तो इसके अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी छोटे छोटे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। वो लोग जिनके दिमाग की फ्रीक्वेंसी एक ही है, वो लोग जिनके इंटरेस्ट कॉमन है, वो लोग हो सकता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस से आते हो, रीजन से आते हो, वो लोग हो सकता है एक पर्टिकुलर, अब मैं चलो इसको वर्ड यूज कर देता हूं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन को बिलोंग करते हो, वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। वो लोग जो सेम आप कह सकते हो सैलरी लेवल पर हो, जिनकी सर्विस कंडीशन या जिनकी आप कह सकते हो लिविंग स्टैंडर्ड एक ही हो, जिनके इंटरेस्ट कॉमन हो, जिनके 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 परसेप्शन सेम हो, they are creating of course the same type of informal organization, and these informal organizations are also protecting their interest against the formal organization. I mean, in every formal organization we are finding the same informal organization. ये एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूं कि अगर मान लीजिए एक छोटी सी कंपनी है जिसमें 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 50 लोगों में से भी कुछ लोग ग्रुप बना लेंगे, 4-5 लोग मिलके, भली कंपनी छोटी है तो भी ग्रुप बन जाएगा। It means informal organizations are always relevant. We cannot criticize them by taking the reference of the perception propounded by trade unions. So this logic of cow sociologists is not completely correct. In this way, we can evaluate the criticism which is specified or demarcated by different types of trade unions. I hope you got my point. और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया कि आंसर लिखा कैसे जाता है। अगर केवल क्वेश्चन क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस पे आता है, देन वी कैन राइट ऑल द पॉइंट्स। अगर क्वेश्चन आता है पॉजिटिव एस्पेक्ट पे, देन ऑफ कोर्स वी कैन हाईलाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट आल्सो व्हाट आई एम टेलिंग यू। एंड इफ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट क्रिटिकल इवैल्यूएशन, देन वी हैव टू डू द इवैल्यूएशन ऑफ क्रिटिसिज्म। व्हाट आई हैव डन विद रिगार्ड टू two important points. One is the small sample size, other one cow sociologist. So I hope so you are in a position to understand the format. ठीक है, मैं कुछ डिक्टेट करवाता हूं आप लोगों को इसके बारे में, और फिर मैं होमवर्क दूंगा जो मैं लगातार क्लास में देता हूं कि अब आपको आगे लिखना है। देखो, मैं फिर बता दूं कि अगर हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं तो हम अपने आंसर की तैयारी, क्वेश्चन की तैयारी 3 तरीके से कर रहे हैं। एक, हम क्रिटिसिज्म को मतलब लिमिटेशन को हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरा, उसके पॉजिटिव पार्ट को भी हाईलाइट कर रहे हैं, और क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो कर ही कर रहे हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, यू आर इन अ पोजीशन टू डील विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। I hope you got my point. Agree? So now just write, be very sure, some important points, grounds of critical evaluation. Title is Critical Evaluation of Human Relation Theory. Critical Evaluation of Human Relation Theory. Critical Evaluation of Human Relation Theory. ठीक है, continue. You can write in point-wise manner. This theory is criticized on the ground that 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 the research conducted by Mr. Elton Mayo, on the ground that research conducted by Elton Mayo, research conducted by Elton Mayo was not empirical. Empirical means scientific. Research conducted by Mr. Elton Mayo was not empirical. Empirical means scientific. Was not empirical and based on small sample size of workers, and based on small sample size of workers, small sample size of workers, small sample size of workers, small sample size of workers. Continue. Size of workers. Workers. Continue. It is not possible to generalize the
it is not possible to generalize the tenets and facets of facet मतलब variables, tenet and facets of human behavior, in different organizational setting, ठीक है, organizational setting. Continue. Human attitude, aptitude, preferences, priorities and value system. And value system could change. In different organizational setting. I hope you got my point. In different organizational setting. तो ये तो हो गया criticism. Now we have to evaluate it. So just stay in the paragraph. समझ रहे हो कैसे लिखना है आंसर? So just stay in the paragraph. ठीक है? Stay in the paragraph. Continue. Although it is not possible to generalize, the human behavior, but all the outcomes of human relation approach, like social norms, informal organizations, participative management, democratic administration, etc. Are the variables which could bring much more production and effectiveness. In every type of organization. I hope you got my concept. In every type of organization. So here what we have done, we have evaluated or analyzed the criticism. It's called as critical evaluation. और दोनों एंगल हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए. I hope the very first angle is clear. Second, next point. The outcomes of human relation approach, या ऐसा करो, the propounders of human relation approach, are criticized on the ground that comma, they are not in a position to bring any instrumental change
any instrumental change in the working condition, any instrumental change in the working condition, income, living standard, working condition, income, living standard, and life support system like education, health, etc. Living standard and life support system. Continue. Trade unions are the better representatives. Trade unions are the better representatives of workers. Trade unions are the better representatives of workers, comma, able to protect their interest. Workers, comma, able to protect their interest in much more, structured manner. Continue. Basically, trade unions have criticized the existence and impact of informal organizations. ठीक है, तो ये तो हो गया criticism. I hope you got my point. And now what we are going to do? We are going to evaluate the criticism. ठीक है, so just in the paragraph. और देखो हम कैसे evaluate करते हैं. ठीक है, continue, change the paragraph. Criticism के बाद paragraph change करो. It is a well accepted notion that within every formal organization including trade unions, every formal organizations including trade unions, comma, there are several informal organizations. And these informal organizations are in a position to set their own standards, and norms for productivity, comma, with the purpose to protect the interest of their group members. I hope you got my point. Group members. Subsequently, last sentence, same paragraph. Subsequently, the relevance of informal organizations. Informal organizations are as acknowledged as formal organizations.
as acknowledged as formal organizations. ठीक है, सो आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया कि पढ़ना कैसे है, किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. They can ask the question about the outcomes of human relation theory. They can ask a simple question in long type of answer, of course 11 marker. वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what are the basic tenets and features or outcomes of human relation theory. They can ask a question about the limitations of the human relation theory. They can ask the human relation theory to do the critical evaluation, you can say basically demarcation. So they can ask question in every format or any format. I hope all the aspects what we have discussed in the class in this particular online discussion is very much clear in your mind. ठीक है, तो यह है human relation theory. There are so many grounds based on which we can criticize and evaluate the human relation theory. तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया है, अब थोड़ा सा काम आप लोगों को भी करना है, क्योंकि हमेशा ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होना चाहिए टीचर का और स्टूडेंट का. केवल टीचर डिलीवर लेक्चर नहीं करे, वो आपको एक वे बताए, तरीका बताए कि आपको पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है. और जब आप समझ गए कि पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे, तो खुद लिखना चालू करो. एग्री? एंड देयर आर सो मेनी ग्राउंड्स बाय व्हिच ऑफ कोर्स वी कैन criticize the human relation concept, but again those grounds can be easily evaluated in much more positive manner. What I have done of course with regard to these two important points. ठीक है, अब आपका काम है कि कुछ और 3-4 ग्राउंड्स को लेकर क्रिटिसिज्म करिए और उसका इवैल्यूएशन करिए, और ये टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाएगा. तो the concept is we are dealing with the theories of administration which are mentioned in your syllabus of public administration, unit 5 of paper 2 part B, I mean polity. And here we have completed actually 3 or 4 important theories of administration, and now only 2 or 3 theories are remaining. Then we are in a position to complete the whole topic of theories of organization. Okay, our next important theory of discussion, what I'm going to discuss tomorrow, would be behavioral approach. मैं आपके हमेशा ये बोलता हूँ कि every successor theory is nothing but the reformatory version of its predecessor one. अगर कोई नया कंसेप्ट आता है, थ्योरी आती है, तो जो पुरानी थ्योरी उसका सुधरा हुआ रूप होती है, और यही हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में. तो वी आर गोइंग टू कवर एवरी थ्योरी इन अ मच मोर सीक्वेंशियल मैनर. आई होप you all are getting benefited by these lectures. If you are having any concern, any issue, or if you want to do any type of appraisal of mine actually and our whole team of PrayasKSG, then please comment on our official web page of YouTube. So I hope the concepts are very much clear. Tomorrow we'll meet, and tomorrow we'll cover one more important theory of administration and organization called as behavioral theory. ठीक है? Thank you very much. Take care, be safe, be healthy, and of course do well. Thank you. Thank you for tomorrow. Thank you.